गुड इवनिंग, नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स क्रेजी का वीकली जो सेशन एक हमने नया शुरू किया है। वीकली डिस्कशन हम शुरू करने वाले हैं प्रो कबड्डी लीग। क्रिकेट पे बहुत ज्यादा बात हो रही है, बहुत ज्यादा लाइव्स आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स क्रेजी पर, बट इस वक्त बात करना है प्रो कबड्डी लीग पर। काफी टाइम हो चुके हैं, बहुत सारे मैचेस हो चुके हैं सीजन 9 के, और बहुत सारी टीम्स इंटरेस्टिंग तरीके से परफॉर्म करी, बहुत सारे एक्साइटिंग प्लेयर्स निकल कर आए हैं। 5 जो क्वेश्चन है मेरे, जो डिस्कशन का पॉइंटर बनेंगे, जिस पर हम बातचीत करेंगे, और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है दो बहुत ही टैलेंटेड लोग जो कि कबड्डी के इकोसिस्टम से बहुत साल से जुड़े हुए हैं। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं अश्विन को। ही समवन जिनसे मेरी मुलाकात हुई थी युवा कबड्डी सीरीज के अभी जो रिसेंट इवेंट रांची में हुआ था। इनके साथ हमने एक प्रॉपर इंटरव्यू किया, बहुत जल्दी अपने चैनल पर रिलीज करेंगे। He understands statistics very well. He's someone who takes care of content at Yuva Kabaddi, and he's wonderful. इनकी जो knowledge थी उससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, and I hope when the interview is out, you will also love the kind of clarity he has in terms of his understanding towards this game. Second, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, लास्ट मोमेंट पे हमें ज्वाइन किया और हमें बेसिकली एक तरीके से नीदरलैंड्स जैसे सहारा बनी थी पाकिस्तान का, आज ये हमारा सहारा बन चुके एग्जैक्टली बिकॉज दीज थिंग्स रियली मैटर टू अस। एंड रवि इज, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, ही इज समवन कम्युनिटी मैनेजर की भूमिका निभाते हैं ये युवा कबड्डी में। ही इज ऑल्सो समवन हु अंडरस्टैंड दिस गेम रियली वेल, बहुत साल से सक्रिय है इस कबड्डी की फील्ड से। सो थैंक यू टू बोथ द गेस्ट फॉर ज्वाइनिंग दिस, और मजा आएगा आप दोनों से बात करके। और सबसे पहला जो डिस्कशन का टॉपिक होगा, अश्विन, आई वुड स्टार्ट विथ यू। लेट्स टॉक अबाउट पटना पायरेट्स। दे आर द टीम्स जिनकी शुरुआत अच्छी नहीं हुई थी, उसके बाद लास्ट 5 मैचेस में अच्छी परफॉर्मेंसेस आई है। सचिन तंवर की बात हो रही है, रोहित गुलिया की बात हो रही है। हाउ डू यू सम अप देयर परफॉर्मेंस अभी तक? अगर मैं उनके परफॉर्मेंस को सम अप करने को बोलूं आपको, सो हाउ डू यू सी देयर परफॉर्मेंस इन दिस एडिशन ऑफ पीकेएल? Hey, hi Ankit, hi SportzCraazy. Thank you so much for getting me on. I think talking about the Patna Pirates, I think Patna Pirates, when they started off this season, I think one of the key things was their coach Ram Meher was not part of their team this time, right? And that something was a shocker to all of us, because last year runners up changing their coach, but it was a very surprising thing. But when they came in, I think they had signed Ravi Shetty as their coach, and a lot of things were new for them. And I think the way they started off was not very promising. Yeah. But of late, you can see the last 5 matches, I think they've been doing great. And I think the main reason is Sachin Thavar. I think, like you mentioned, Sachin Thavar's performance has been, the Super 10s after Super 10s has been coming. And the moment he starts playing well, the whole unit looks completely different, right? And I think along with Sachin, I think the defense also has been stepping up, like Sunil, the right corner, who's been taking up responsibilities and scoring high fives at crucial junctures. And they have these other key defenders as well, like Manish has been doing well in the covers, who's a Yuva Kabaddi series player. And I think Monu is another player who's been he's a raider, but from an in position he puts the surprise tackles, and every match he's been putting 2-3 tackles. I think that's been one of their key things to their success this season, and I think they look like a team to beat this time for sure. Okay. रवि, क्या लगता है आपको? पटना पायरेट्स की परफॉर्मेंसेस आपने देखी है, आपका क्या टेक है उनकी परफॉर्मेंस पर अब तक? अभी तक पटना पायरेट्स के मतलब हमने नाम दिया सचिन इज प्लेइंग एक्सट्रीमली गुड, बट इफ यू अगर आप मनीष पुजिया का परफॉर्मेंस देखें, द वे ही सपोर्ट सचिन तंवर, कि लाइक इन लास्ट मैच मनीष पुजिया वाज नॉट अवेलेबल, बट the Patna was lacked due to his second support leader. Anush was not as good as Manish Pujiya. So सचिन के साथ साथ रेडिंग डिपार्टमेंट को मनीष पुजिया ने जिस तरीके से सपोर्ट किया, एंड डिफेंस जैसा उसमें ने बात किया कि लाइक आप किसी को भी देखो, सुनील, शार्दुल एंड मनीष, नीरज कैप्टन, एंड मोनू हुड्डा फ्रॉम द right in or left in, they really create a good combination as a team, and they played really well in the last few matches. Okay. Ashwin, is there any other quality if you talk about Patna Pirates, like some of the records जो मैं देख रहा था अभी कि जो recent match अभी दिल्ली के against हुआ है, वहाँ पे सचिन तंवर had scored 9 great points, and then he was supported, Rohit Gulia also scored very well. So how do you see कि जिस तरीके से team gel up हो रही है, जिस तरह से tournament progress हो रहा है, what do you think is the reason behind their success? Because initially when you lose certain games, you tend to lose your confidence. So what do you see exactly is working for them in this season, Patna Pirates? I think first things, I think Sachin's form was one of the key things. I think when he started off, he was not able to convert those Super 10s, right? And he was not getting those Super 10s in the start. But as the games progressed, he started stepping up his game. And once he starts stepping up, the team looks very different. And one more thing I would like to highlight is the
in the first few games, you would not have seen Mohammad Reza Chiani part of the team because of some issue which Iran players were not part of. But the moment he's come back, I think he brings a very aggressive touch to this defense, right? And he's a very aggressive defender. He's fearless, and he puts those very solo tackles and those breathtaking tackles where I think the whole team can ride on high on his confidence as well, right? And once he's here, I guess he's been scoring 2-3 points at regular intervals, and I think this is one of the reasons why I think the whole team looks pretty gelled up right now. I think in the starting it was looking a little scratchy, but now I think everyone is supporting each other, and it looks like a very solid unit right now. Sure. अभी रिसेंटली अगर हम बात करते हैं तो राहुल चौधरी ने 1008 पॉइंट्स कंप्लीट किया अपने पीकेएल के करियर में. रिसेंट जो मैच हुआ था इनका दबंग दिल्ली और जयपुर पैंथर्स का, वहां पर आप देख सकते हैं उनकी परफॉर्मेंस किस तरह से थी. राहुल चौधरी, जब मुझे याद है कि जब पीकेएल की शुरुआत हुई थी उसके कुछ सीजन्स के बाद से ही इज ऑलरेडी अ सुपरस्टार, बट उस वक्त उनका बहुत ज्यादा नाम था, बीच में थोड़ा डिप आया उनकी परफॉर्मेंस में. सो हाउ डू यू सी, कितनी बड़ी बात होती है एक प्लेयर के लिए, एंड व्हाट डू यू थिंक इज द रीजन बिहाइंड हिज सक्सेस? उनके सक्सेस का कारण क्या है पीकेएल की जितने भी संस्करण उन्होंने खेले अब तक? राहुल चौधरी, व्हाट आई थिंक कि राहुल चौधरी स्टार्टिंग से एक पीकेएल के फेस है, वो एक स्टार लीडर, सोमैन ऑफ पीकेएल. राहुल चौधरी का स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये था इनिशियल सीजन में कि वो दोनों साइड से रेड करते थे, वो राइट से भी एंड लेफ्ट से भी, और वो डिफेंस को कभी सेटल नहीं होने देते थे. बट when the season goes on, I don't know, some injury issues or team setup, what's bad going on with them, but after that his performance got affected somehow. So after that, in this season, like before this season, like in national games we saw Rahul Chaudhary, जिन्होंने यूपी को मैच जिताया, and after that in PKL he was not performing as a main leader but now as a support leader. That was missing in last 2 or 3 edition as well. So this time Rahul Chaudhary as a support leader अर्जुन देसवाल को, और उन्होंने अपना 1000 पॉइंट somehow की प्लेयर्स लाइक राहुल चौधरी 2-3 एडिशन पहले ही हो जाना चाहिए था, बट उन्होंने जाके इस एडिशन में फाइनली किया. सो इस एडिशन राहुल चौधरी की झलक हमें देखने को मिली, जो कबड्डी जगत में सारे फैंस चाहते हैं कि राहुल चौधरी दिखे, जो कि 2-3 एडिशन से शायद मिसिंग थे. सो इस समय अब नेशनल्स में भी देखो या फिर नेशनल गेम्स में भी या इंडियन नेशनल्स में भी का परफॉर्मेंस इस सीजन और फिटनेस पे भी उन्होंने काफी काम किया है. जब मैं उनसे युवा कबड्डी सीजन 1 में मिला था तो मेरी उनसे बात हुई थी, तो उन्होंने बोला था कि मैंने अभी फिटनेस पे एंड उनका नेशनल पे फोकस था उस टाइम पे. फिर वहां से उनकी गेम इस सीजन काफी ग्रो हुआ है, एंड अभी अगर देखें तो वो मतलब अपने आप को एज ए सेकंड लीडर मान चुके हैं, नॉट एज अ मेन लीडर, और उसी हिसाब से खेलते हैं कि जब टीम को जरूरत पड़ती है वो जाके पूरा का पूरा हेल्प करते हैं अर्जुन देसवाल का. और उस हिसाब से जयपुर पिंक पैंथर्स आप देखें कि इस सीजन काफी ज्यादा मैचेस जीते हैं, लगातार 5 या 6 मैचेस इस सीजन अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो जीते हैं. सो राहुल चौधरी it's best at this season as well. Ashwin, I want to jump to the next topic, which is about the defending champions Dabang Delhi. What do you think it's not working for them? Recently they have lost 5 matches in a row, और जब last edition finish किया तो जैसे शुरुआत करी थी, people thought कि the season belongs to them. What's not working for them, Ashwin, to be honest? I think it's been a roller coaster ride for them, because when they started off this season, they won back-to-back matches and they were looking pretty sorted with their defense. Their raiding Naveen was always going to be doing well for them, and the defense was pretty much settled in the start. But actually in the last 5-6 games, I think their defense looks clueless actually, because there's no coordination, there's no I mean, the defense unit looks settled as per the resources, but in terms of performance, I think there's a lot of these unforced errors, right? There's a lot of these errors which keeps coming up, and they've been giving away points more than the Raiders taking points from them. I think that is one of the key reasons. And Naveen has still been doing well. Like, I think apart from that one game where he had his back spasm where he scored only 5 points, but other than that, he's been scoring super tens at his will, right? And but their defense is the main reasons why they are not been performing. But even with Naveen, I think one more plus point for them which has been happening is their support raiders. I think their support raiders like Ashu Malik has been shining through all these games as well. But it's just that their defense need to step up, and if their defense can pull things up together, they can make a comeback in this event, because they're still a pretty solid team to beat. But I think defense is where they've been losing out their games this season in the last 5-6 games. रवि, आपको भी लगता है डिफेंस वीक है इनकी, या प्लानिंग में कहीं वीकनेस दिख रही है आपको दबंग दिल्ली की इस बार? इसी अगर अभी आप दबंग दिल्ली का डिफेंस देखो तो जो लेफ्ट कॉर्नर है उनका, कभी उस पे विजय, कभी संदीप दूल, तो इस तरीके से अभी 6-7-8-9 मैचेस हो चुके हैं, बट अभी डिफेंस उनका सेटल डाउन नहीं हो चुका है.
एंड द मिस्टेक्स जो रवि एंड विशाल, डिफेंस उनका अप एंड डाउन हर मैच में होता है. किसी मैच में विशाल काफी ज्यादा अच्छा खेल जाते हैं, किसी मैच में उनकी कवर्स की जो जोड़ी है रवि और विशाल की वो काफी एवरेज. और थ्रू आउट द मैच उनका कॉन्फिडेंस मेरे को लगता है कि डिफेंस पे काफी कम हो रहा है, कि लाइक अभी सपोर्ट नहीं आ पा रहा है टाइम पे. अगर आप पिछले मैच में देखें तो ट्यूशन का एंकल होल्ड बट सपोर्ट नहीं आया टाइम पे, तो उस वजह से उनका काफी पॉइंट लूज हो रहा है. एंड नवीन हमेशा से मतलब दबंग दिल के एक्स फैक्टर हैं, बट इस सीजन नवीन को भी लाइक उनके स्ट्राइक रेट में भी थोड़ा ड्रॉप डाउन हुआ है. लाइक द आई थिंक बंगाल वॉरियर्स का मैच था जहां उनको 4 बार कवर्स ने पकड़ा, जो कि मतलब नवीन को कवर्स से मारना काफी मुश्किल था पहले. बट अभी उनका मेरे को लगता है इंजरी कंसर्न भी है नवीन का, एंड थोड़ा सा उनका ड्रॉप डाउन हुआ है. बट सपोर्ट रेट अच्छा काम कर रही है, एंड अगर दिल्ली अपना डिफेंस सेट कर देती है अच्छे से तो दे विल बाउंस बैक. They will obviously bounce back. Sure. So we hope कि दिल्ली bounce back करे. Ashwin, I want to talk about the other topics because हर सेशन में हमारी कोशिश होगी जितनी भी टीम्स हैं 2 टीम्स को पिक करें और थोड़ी सी उनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस पर बात की जाए. So दोनों का ओपिनियन लूंगा. सबसे पहले Ashwin, I would start with you. What do you think about you Mumbai and Telugu Titans performance so far in this PKL season 9? I think Telugu Titans is a very I wouldn't say very surprising unit. Every time they come up with a in the auctions they look like a pretty solid team, and whenever they come into the tournament the performance doesn't state that. I think this time also this time when they at the bottom of the points table right now. They've just won 1 game in the season and they've lost 10. And no, the funny thing is I think this time when it started, I think they actually look more promising compared to the last editions, because this time they had Ravindra Payal in their right corner, and their cover combination, I was pretty interested to see how Arrise and Urjit is going to play well in the covers, right? It's a very new combination, but both are seasoned defenders, and that combination was pretty interesting to watch. And they had Siddharth Desai in their team, which is again over the last 2 seasons injury issues and all that. But I think overall they looked like a solid unit when they came into this event, similar to Tamil Talevas in season 7, right? Where all the big heads and the stars were there in the team, but as soon as the tournament started, there is a dip. I don't know. I mean, it's very difficult to sum up their season, because with the team they have, the points table doesn't reflect that as well, because losing 10 matches, they look pretty clueless. I think in the starting they had Vinay Virender, who was again a YKS player who's been playing well, who got chances, but again he went missing suddenly, and then now their rating looks pretty unsettled. I think Siddharth Desai has been playing well in the last 2-3 games, but I think their defense again is a very star-studded defense, but I think performance-wise it's been very dull. I think they have not been able to score those high fives or crucial tackles. I think the matches are going close to a certain extent, but there are a few games that's gone close, but again towards the end they're not able to close those games as well. So I think Telugu Titans have a lot to think about this season, and it looks almost impossible for them to make a comeback, I would say. What about you Mumbai, Ashwin? What do you think where they can improve? I think Mumbai is one team which again it's a very different team where they trusted on their young power, right? I think one of those teams which had a lot of these young players coming up, and I think Surinder as a captain has been impressing everyone, right? Because Surinder is known to be a very aggressive defender in the past, but as soon as he took up the captain's role, you see very less attempts. I mean, he's been very calm, he's been trying to lead the troops well and all that, and I think the rating as well, I think Jai Bhagwan has been doing well, Ashish has been doing well, but somewhere I think they also have this issue of closing out games. I think they're there in the matches for the first 20-30 minutes, but in the last 10 minutes they've not been able to convert those 20-30 minutes into a good game, right? And they are succumbing to the pressure towards the end. I think that's been a tough ride for them, but I think they are still a promising side, but let's see how it goes for them. I think they are in a very good position right now. Good position right now, but again, hopefully they'll be able to continue it forward. रवि, आपको क्या लगता है तेलुगु टाइटंस जो बात अश्विन ने करी उससे आप कितना एग्री करते हैं, और आपको क्या लगता है उनके डाउनफॉल का रीजन क्या है? As Ashwin said कि तेलुगु टाइटंस ऑन पेपर आप टीम देखो तो आफ्टर द ऑक्शन लाइक उनके पास सब कुछ था. बेस्ट राइट कवर, बेस्ट लेफ्ट कवर, बेस्ट कॉर्नर्स, सिद्धार्थ देसाई, मोनू गोयल, and young players like Vinay Virender, Nitin Deswal and Mohit Nagar. बट द थिंग इज कि उनकी पूरी टीम एक साथ कभी किसी मैच में खेल ही नहीं पाई. लाइक वन मैच सिद्धार्थ देसाई ने बैट खेला कि मैच जीत, तो उनको मैच जीतना है तो पूरी टीम को डिफेंस रेट
सबको एक साथ अच्छा खेलना पड़ेगा। लाइक अगर आप अभिषेक सिंह को देखो, ही इज अ गुड हीडर, लाइक उनका परफॉर्मेंस भी 5 एडिशंस में काफी अच्छा है। बस इस सीजन अगर एक मैच में सिद्धार्थ देसाई ने अच्छा किया है तो एक मैच में अभिषेक ने किया, दोनों उनके हीडर कभी कॉम्बिनेशन में अच्छा नहीं कर पाए। एंड डिफेंस की बात सोचे तो फिर सेम चीज है, तो उनको एज अ टीम अगर वो बाहर आए, अपने आप को बाहर आए कि लाइक सबका सब एक मैच में एक परफॉर्मेंस दे। एंड डिफेंस में एरर्स बहुत ज्यादा है, लाइक अगर आप पहले रविंद्र पहले कैप्टन थे, फिर उनको इतने एरर्स हुए कि वो प्लेइंग 7 से ही बाहर हो गए, फिर उन्होंने चेंज किया, तो अभी उनका स्टार्टिंग में भी टीम सिर्फ सेट नहीं हो पाया। पहले उन्होंने यंग रेडर्स पे भरोसा दिखाया, फिर उन्होंने अभिषेक, सिद्धार्थ देसाई, मोनू गोयत को बाहर अंदर आया, एंड देन फिर अभी तक उनका एक देखो तो टीम भी सेट नहीं हो पाया। एंड अभी बल्क में परफॉर्मेंस नहीं आ पा रहा है बेसिकली। लाइक अगर सिद्धार्थ देसाई को देखो तो 2 मैच में चला, फिर अभिषेक सपोर्ट पे आया, एंड अभिषेक इज अ रेडर कि आप उनसे सुपर 10 एक्सपेक्ट कर सकते हो, बट अभी उस तरीके का परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है। सो उनको पूरे एज अ टीम अगर खेले तो शायद वो मैच जीतना स्टार्ट कर दें। Yeah, I think one more point I'd like to add is like Ravi mentioned Abhishek Singh, right? I think Abhishek Singh is even in the last season for U Mumbai, he was pretty good, right? I mean, he's a Super 10 specialist. He's very he's a kind of a player who's been performing very well for the last 2-3 seasons, right? I mean, at least 2 seasons I can remember. But I think this time there is no, I'm not able to see that zeal in him, right? I don't know what is the issue. Maybe it's an injury or it's I don't know what. But he's not been. He doesn't look comfortable in that lineup because he's been looking very clueless in the way he rates, gets caught at very usual situations. I mean, it's been a pretty tough ride for him, and I think if Abhishek Singh can step up his game, and like Ravi mentioned, if they can play a single unit, then I think we might see some changes. But I still don't think they have any much chance in this season, I guess. रवि मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कौन से यंग प्लेयर्स हैं जिन्होंने आपको बहुत इम्प्रेस किया है इस बार। कुछ प्लेयर्स का अगर आप नाम ले जो पहली बार खेल रहे थे पीकेएल में और उन्होंने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस दी। अमूमन तो आपको मौका मिलता नहीं क्योंकि ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स होते हैं, लेकिन कौन से प्लेयर्स हैं जिन्होंने लिमिटेड पॉइंट ऑफ टाइम में इस एडिशन में उनके गेम देखकर आप बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुए हो इस बार एडिशन में पीकेएल के? I can only go with Narendra Kandola. The way तमिल राइवल्स को मतलब फर्स्ट मैच में ही पवन शेरावत का बाहर होना अलग ही झटका था उनके, बट नरेंद्र कंडोला ने जिस तरीके से मैचेस जितवाए हैं, वो फर्स्ट डेब्यू सीजन है, बट उस डेब्यू सीजन में तमिल राइवल्स का मेन रेडर बन के निकलना और टीम को लेट डाउन नहीं होने दिया उसने। आई थिंक नरेंद्र कंडोला इज वन ऑफ द बेस्ट डेब्यूटेंट ऑफ दिस सीजन। एंड इसके बाद अगर डिफेंस में देखे तो मोहित राठौर फ्रॉम यू मुंबई ऑन ऑफ सीजन रहा है, बट किया है उन्होंने, परफॉर्मेंस उनके अच्छे जा रहे हैं टीम के अकॉर्डिंग। सो दीस आर द प्लेयर्स। मतलब आसू मलिक एज अ सपोर्ट रेडर फॉर नवीन, ही हैज स्कोर्ड 17 पॉइंट इन आई थिंक लास्ट मैच और लास्ट मैच आई एम नॉट श्योर। सो these young players are really doing good for us. Like now Manish Dhul for Patna Pilot as well. Manish Dhul, I remember I met him in the Yuva Kabaddi and he was looking promising back then. Ashwin, who do you think are the players जिनका गेम से आप इंस्पायर हुए इस बार, इम्प्रेस हुए बेसिकली कि आगे जाके अच्छा करेंगे? Who are the players? I think like Ravi mentioned, Narendra Kandola. I think Narendra Kandola has been a revelation this season, and like Ravi mentioned, the way he took up the responsibilities when player like Pawan Sherawat misses out in your team, where the whole team was built up saying that Pawan Sherawat, and then there was this new young player. I think such promising to see these young kids coming out and playing so well, right? And there's so much clarity in the way he rates. I think very, very clear on what he wants to do, and does not repeat his mistakes. I mean, it's very difficult to catch Narendra Kandola, right? And it's been a brilliant season for him. And I think one more key things about young players is if you look at the top 5 stats, right? Top 5 raiders, and then you'll see players like Bharat, Rakesh. I think Rakesh Sangroy, I think he's playing his second season, but again last season he was not getting a lot of games. This time he's been playing as a lead raider for Gujarat. Rakesh Sangroy also has been a brilliant addition to his team, and then a young player who's very clear on his thoughts and how he rates. I think for me the key thing about this season is I think you can see these Bharat players, like these 2-3 names who were there in the stats, right? Otherwise it's always about these old stars who's been playing well always, but it's surprising to see these players, and I'm sure as we go ahead we'll have more and more players from the young group to keep doing well. 100%. Yeah. तो अब आते हैं आखिरी सवाल पे। रवि, आपसे शुरू करना चाहता हूँ इस बार मैं। कुछ मैचअप्स की अपने बात करी थी मैं जब अश्विन से लास्ट टाइम मिला था। अश्विन, आई वुड स्ट्रेट अवे कम टू दैट क्वेश्चन आल्सो। आई टेक योर ओपिनियन, बट मैं रवि से शुरू करना चाहता हूँ।
कि कुछ एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स के जिनका गेम बहुत साल से अपोनेंट देख रही होती है, खासतौर पर अगर एक अच्छा रेडर है और काफी एस्टैब्लिश्ड रेडर है तो डिफेंस काफी प्लानिंग करता है। आपको क्या लग रहा है इस बार जितने भी आप मैचेस देखे, बिकॉज यू बोथ आर फॉलोइंग पीकेएल वेरी वेल, कोई इंस्टेंस आप शेयर कर सकते हैं हमारे व्यूअर्स के साथ जहां पर एक एस्टैब्लिश्ड रेडर के खिलाफ एक प्रॉपर मैचअप, एक प्रॉपर प्लानिंग की गई थी डिफेंस के थ्रू, और आपके लिए जो बेस्ट मैच अभी तक रहा है सीजन का वो कौन सा रहा है? रवि, आई वुड स्टार्ट विद यू। पहले तो मैं मैसअप की बात करता हूँ। जैसे कि ये अभी प्रदीप नरवाल को देखो आप, एवरी डिफेंडर उनको जानते हैं कि इनको थाइस पे जाना है, एंड द वे फजर चली, उन्होंने रेड करने नहीं दिया। पुनेरी के अगेंस्ट मैच में प्रदीप नरवाल गॉट आउट 4 times in his 5 hits, and if in the last match, so प्रदीप नरवाल जैसे प्लेयर्स के खिलाफ डिफेंस अब इतना तैयार होकर आया कि आप इमेजिन नहीं कर सकते प्रदीप नरवाल को पूरे मैच में एक पॉइंट तक नहीं मिला। कल यूपी का जो मैच टाई हुआ, यूपी का 15 पॉइंट का रेट था, प्रदीप नरवाल रेट पे नहीं गए, और थैंक्स टू सुरेंद्र गिल कि उन्होंने मैच बचाया यूपी के लिए। बट प्रदीप नरवाल जैसे रेडर के लिए डिफेंस पूरी तरीके से हर एक डिफेंस तैयार होकर आती है। आपका जयदीप को देखो, जिस तरीके से कवर पे उन्होंने रोका है प्रदीप को, या फिर उससे पीछे मैच में फजर अतरचरी ने जो 2 थाई होल्ड किए उनके, या मतलब 4 times he got out against फजर अतरचरी। सो दिस टाइप ऑफ थिंग्स की प्रदीप जैसे रेडर को अगर 2 मैच में पॉइंट्स नहीं मिले तो फिर इतना ये डिफेंस का ये पूरा प्रॉपर होमवर्क है कि लाइक जो एनालिसिस है उनका, जो भी एनालिस्ट उनके साथ है, सो इस तरीके से अब हर एक रेडर के खिलाफ ये चीज होता है। सो आई थिंक प्रदीप एंड मोस्टली यू कैन चूज कौन सा रहा रवि आपके लिए बेस्ट मैच अब तक का पीकेएल का, इस एडिशन का? कौन सा मैच है कोई जो आपको लगा ये बेस्ट मैच है, मतलब इन टर्म्स ऑफ कंपटीशन, इन टर्म्स ऑफ स्किल्स जो आपने देखा हो? Best match, I think I choose latest one like Patna versus UP. The match was Patna was I think 1 point behind, and Sachin got super raid in his last raid. So I think that was like कि वो मैच 3 के डिफेंस में वहां पे सचिन के लिए डू और डाई रेड और काफी मुश्किल था वो सिचुएशन, बट सचिन ने किक लगाया, मतलब 2-3 स्किल दिखा के स्केप भी दिखा उसने। सो वहां पे उसने मैच को पटना पायरेट्स के फेवर में लाके दिए। और उससे पहले वो मैच स्पेशल इसलिए कि उससे पहले पटना मतलब हार के आई थी मैचेस, और सो सचिन पे उस टाइम पे प्रेशर था। उसमें लास्ट रेड में वो टाई के लिए नहीं गया, वो मतलब टीम को एक जीत से क्योर करना, जो कि काफी मतलब डिसीजन मेकिंग काफी इसके कि हम टाई के लिए जाए या फिर टीम का डिफेंस है, बोनस भी नहीं है। सो वहां पे सचिन का जो डिसीजन था और द वे ही शो हिज स्किल, तो वो मेरे लिए काफी अच्छा मोमेंट था। So Ashwin, by your comments, Ashwin, best match of this edition so far for you, and matchups, कोई matchups की अगर हम example आप share कर दो हमारे viewers के साथ। I think talking about matchups first, I think one of the key things I have noticed is I think when how teams are coming planned for Maninder Singh from Bengal Warriors. Working closely with them last season, I was there with Bengal Warriors, and I think last time itself it was a pretty evident that all the defense has been coming pretty much planned for Maninder Singh, right? I mean, his movements are pretty. It's been studied, and a lot of these corners, I think left corners have been attacking him a lot, and then the covers as well. So, the moment he makes this bonus movement, the covers used to come and attack. I think this time also it's evident, but Maninder being Maninder, he's been shining like always. I think players like Maninder Singh, it's very surprising to see. I think how much ever a team plans against him, but the power he has, I think it's very difficult to stop a raider like him. But I think there is a plan which is evident from all the left corners and the right covers. They've been doing pretty well against Maninder. That's one matchup. And other one, I think talking about the best game, I think it was a recent game. I think Tamil Thalai was tied against Bengal Warriors 41-41. I think that was a pretty interesting game. I think Bengal Warriors came from back. They were out on and out in the first half, I think, and then they came back towards the end to tie this game. I think that was pretty breathtaking match to watch. And yeah, and also I think I remember one more game. I'm not sure which team is this. Vikas Kandola did a super raid in the last. Haryana Steelers, Vikas Kandola, Haryana Steelers. He played for Bengaluru Bulls. I think Bengaluru Bulls. Bengaluru Bulls. I think in the last 30 seconds, I think he did a bonus point plus 3 points. I think it was one game. I'm not really able to recall which team is this, but I think that was also one of the great game where Bengaluru Bulls pulled off. And it's awesome to see Bengaluru Bulls coming out from nowhere, right? I think it's very interesting. Like the coach also said in the press conference, right? The first half they look like they're clueless, and then in the second half they come back from nowhere and try to. I think Bharat has been the key player for them. I think, but yeah, I think this Bengaluru Bulls game where Vikas Kandola did a brilliant super raid and won it for them also is a
surely in the top list. Yeah. Before I let you both guys go, इस सेशन से पहले मैं बस ये समझना चाहता हूँ आप दोनों से लास्टली एक स्मॉल कमेंट, पुनेरी पल्टन की सक्सेस का क्या राज अभी तक? They are sitting at the top of the points table. What's working for them, both of you? Ravi? I think the Puneri Paltans टीम का जो कॉम्बिनेशन है, am I audible? Yeah, you are. Yeah. Please. पुनेरी पल्टन का जो कॉम्बिनेशन है, आप अगर देखो कि अगर उनका भी एक मेरे हिसाब से जो एक थोड़ा सा वीक एलिमेंट लग रहा है मेरे को, वो है नबी बख्श का फॉर्म. अगर नबी बख्श का फॉर्म आ जाता है तो पुनेरी पल्टन को हराना काफी मुश्किल है. उनके पास अगर रेडर्स में देखो तो असलम, मोहित, नबी बख्श, या फिर डगआउट में बैठे हुए हैं पंकज मोहिते, आकाश शिंदे. डिफेंस में आप वेल सेटर डिफेंस है उसका, फजल. सो उनका जो टीम है वो वही एक यूनिट है कि जो दिखता है कि सिंगल यूनिट वो खेल रहे हैं और उनका परफॉर्मेंस भी आ रहा है. एंड द वे फजल चली टीम को कंट्रोल करते, लाइक हर रेड से पहले मैं देखता हूँ कि मतलब यंग रेडर्स को कुछ ना कुछ वो बता के भेजते हैं, लाइक मोहित को हो गया, आकाश को हो गया. सो असलम के आउट होने के बाद, असलम के बाद मतलब आई थिंक कि इंजरी कंसर्न के बाद आकाश शिंदे को जिस तरीके से उन्होंने कॉन्फिडेंस दिया है, सो मतलब वो एक यूनिट की तरह खेल रही है. सो उनका एक मतलब वेल सेटेड टीम जो कर सकते हैं ना इस टूर्नामेंट का, आई विल गो विद पुनेरी पल्टन. Ashwin, close comments on Puneri Paltan's performance? I think Puneri Paltan, I think they're topping the table right now, and I think there's no surprise with. I think they have a depth in their team. Their rating in terms of, I think, like Ravi mentioned, when Aslam got injured, he just got one more player who exactly looks like him, who plays like him. I mean, that's very like the same kind of a raider, right? A left raider, and his movements are also pretty much very similar, very lethal like Aslam Inamdar. I think Akash Shinde has been their highlight in the last week, I would say. Yeah. And also directly coming up and trying to fill shoes like Aslam Inamdar is a big thing, and he's been doing well. I think along with Mohit Goyat, I think Mohit Goyat is a no-brainer. I think he's been doing well. Maybe to start off with, he was not little that quick because of a small injury, I guess. But other than that, I think after that he's been come back. I mean, he has come back and he's been doing well. And I'd like to highlight the coach. I think BC Ramesh runs his troops very well, right? Is the defense, and I think the defense with Azal coming back, it's been looking pretty lethal. And the right cover, the boy from Tamil Nadu, I think his name is Natarajan, Abhinesh Natarajan. He's also been doing pretty well. But I think the whole unit, I think like Ravi mentioned, they have been playing like a single unit, and they look very lethal. And I think they are up for grabs this time. The trophies looks like it's going to be with Puneri Paltan, and let's see how that turns up. So thank you Ashwin, thank you Ravi, बहुत ज्यादा अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला. एंड व्यूअर्स, जब ये वीडियो आउट होगी उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत मजा आएगा. हर वीक हम ये शो लेकर आएंगे और एक्सपर्ट्स के साथ आएंगे और प्रो कबड्डी लीग के जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, जो डायमेंशंस है, उसको डिस्कस करेंगे. सो थैंक यू Ashwin, थैंक यू Ravi once again, and thank you everyone for watching. Keep subscribing the channel, keep supporting Indian kabaddi, because kabaddi आने वाले समय में it's gonna rise. जितना राइज अभी हो चुका है, इसका 10 स्टेप्स ज्यादा ये बढ़ेगी कबड्डी, क्योंकि जिस तरीके से लीग्स आई हैं, जैसे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, जो स्टेक होल्डर्स हैं, फैंस है, बेसिकली ये गेम डेफिनेटली कमाल करने वाला आने वाले सालों में. सो थैंक्स Ashwin, थैंक्स Ravi, thank you everyone for watching.